Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to again discuss about the mediastinum. In my previous lecture, I have told you about the superior mediastinum. What is mediastinum, how it is divided into superior and inferior mediastinum, and I have told you about all the contents of the superior mediastinum. Now we are going in deep discussion of the inferior mediastinum. Again, the same diagram you can see here. This one is the superior mediastinum that is lies just above the transverse thoracic plane. What is the transverse thoracic plane? Again, I am repeating this, that the imaginary line passing from the sternal angle up to the between the T4 and T5 vertebrae. Okay, just above this transverse thoracic plane is the superior mediastinum, and below is the inferior mediastinum. The inferior mediastinum is divided again into three main categories, that is anterior mediastinum, middle mediastinum and posterior mediastinum, and on each side there is a longer pleura that is not the part of mediastinum. Okay, so I am again repeating because I have to tell you about today the posterior mediastinum. In this diagram you can see here that this anterior mediastinum, you should know about first of all the anterior mediastinum. Anterior mediastinum is very narrow space in front of the pericardium, and it is overlapped by a thin anterior borders of both of the lungs on each side. Okay, it is continuous through the superior mediastinum with the pretracheal space of the neck, and it only contains the areolar tissues and part of thymus gland. But you have to memorize the boundaries of the anterior mediastinum. The anterior mediastinum is bounded anteriorly by the body of sternum, posteriorly by the pericardium, and superiorly by the imaginary plane that is separating the superior mediastinum from the inferior mediastinum. Inferiorly there is a superior surface of diaphragm. Okay, so this was anterior mediastinum, and on each side there is a mediastinal pleura. The contents of this anterior mediastinum is sternopericardial ligaments, lymphatics and lymph nodes, small mediastinal branches of internal thoracic artery, and the lowest part of thymus. I have told you about the thymus before, and areolar tissue. So the anterior mediastinum is not that much important, but you have to memorize its boundaries as well as the contents of this. Now behind this anterior mediastinum is the middle mediastinum. Okay? The middle mediastinum is occupied by the pericardium and its contents, along with the phrenic nerve and the pericardiophrenic vessels. The boundaries of middle mediastinum is sternopericardial ligaments anteriorly, ठीक है, and posteriorly there is esophagus, descending thoracic aorta, azygous vein that are going behind it. ठीक है, यहाँ पे descending thoracic aorta तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अलावा phrenic nerves and cardiophrenic vessels भी होती हैं. ठीक है, जो middle mediastinum का, and on each side again the mediastinal pleura. These are the basically boundaries of middle mediastinum and contents of the middle mediastinum. We all know that the heart is enclosed in the pericardium. ठीक है, the arteries that are present as the part of the ascending aorta. ठीक है, जो कि थोड़ा सा आ जाता है इसमें. ठीक है, जब यहाँ से निकलता है राइट एट्रियम से. So part of the ascending aorta, pulmonary trunk and two pulmonary arteries, and veins में lower half of the superior vena cava आ जाती है, and the terminal part of azygous vein. So these are basically the contents of middle mediastinum. ये जो middle mediastinum है इसमें पूरा pericardium और heart डॉक्टर रियाज आपको पढ़ाएंगे along with its arterial supply. So I am just leaving this middle mediastinum in its deep discussions. ठीक है. Now behind this is the posterior mediastinum. So you have to memorize the boundaries of posterior mediastinum. It is bounded anteriorly by the pericardium, bifurcation of trachea, and the pulmonary vessels, and posterior part of upper surface of the diaphragm. ठीक है, you can see here. This one is the posterior mediastinum. ठीक है. So posteriorly there are lower 8 thoracic vertebrae. You can see here. ठीक है, these are the vertebrae from T5 to T12. These are the part of posterior mediastinum, and on each side there is again the mediastinal pleura. Now today I am going to tell you about the posterior mediastinum. This is another diagram. You can see here that the posterior mediastinum, or we can say the posterior part of the inferior mediastinum. ये दूसरा व्यू है जो आपको नज़र आ रहा है.
ठीक है. इट इज़ लोकेटेड inferior टू द ट्रांसवर्स thoracic प्लेन एंड anterior टू द T5 to T12 vertebrae. ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी पहले बताई है. इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है posterior mediastinum. ठीक है. इट इज़ लोकेटेड inferior टू द, यहाँ पर ट्रांसवर्स, ये दूसरा व्यू है. ठीक है. इट इज़ लोकेटेड inferior टू द ट्रांसवर्स thoracic प्लेन anterior टू द T5, यहाँ पर T5 to T12 vertebrae, posterior to the pericardium and the diaphragm, and in between the parietal pool of the two lungs. The posterior mediastinum contains what are the contents of the posterior mediastinum? Is the very important content is the descending thoracic aorta. Along with this, there is a thoracic duct and lymphatic trunks, posterior mediastinal lymph nodes, azygous and hemiazygous veins. Esophagus का कुछ पार्ट आता है जो कि superior mediastinum से आ रहा होता है, जो कि यहीं से फिर गुजरता है. ठीक है, तो you have to memorize this. ये diagram है. This is a diagram that is present in your atlas. You have to see, you can see the relations as well of this is the descending thoracic aorta. ठीक है. Today we are going to study about the descending thoracic aorta. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको thoracic duct और lymphatic trunks बता दिए जाएंगे. एसोफेगस आपने कर ली है पहले ही, और एजाइगस और हेमिजाइगस वेन्स भी मैंने कवर करा दिए. तो मेन पार्ट जो हमने आज पोस्टीरियर मिडियास्टिनम में करना है वो है descending thoracic aorta and its branches. This one is the descending thoracic aorta. Before going into this discussion about the thoracic aorta, you should know about the ascending aorta, arch of aorta, and then this is descending aorta. I have told you before that you have to memorize all of the branches of this aorta. So first of all is the ascending aorta. Ascending aorta has right and left coronary arteries. Okay, these are simple the branches which you have told by Dr. Riaz. Then come on towards the arch of aorta. Arch of aorta has right and left sides difference. There is a difference in the right and left side which I have told you in the previous lecture. And today we are going to study about the descending thoracic aorta and its branches. How it starts, where it is located, what are the relations of descending thoracic aorta, and what are their branches. You should memorize all of them. The thoracic aorta is a continuation of the arch of aorta. It begins on the left side of the inferior border of the body of T4 vertebrae. This is the T4 vertebrae. Just opposite to that, inferior border of the body of T4 vertebrae, and it descends in the posterior mediastinum on left side of the T5 and T12 vertebrae. थोड़ा सा लेफ्ट होती है इसके, आपने देखा है इसके अंदर भी आपको रिलेशनशिप पता चल रहा है. As it descends, the thoracic aorta approaches the median plane, displaces the esophagus towards the right. ठीक है, esophagus थोड़ा right होती है, ये थोड़ा सा left होती है. ठीक है. The thoracic aortic plexus, that is an autonomic nervous system, it also surrounds it. The thoracic aorta lies posterior to the root of the left lung. यहाँ पे left lung आ जाता है, जैसे ये इसके साथ, तो ये लेफ्ट लंग के रूट को वो कवर करती है, वहाँ से गुजरती है, तो इसलिए इसके ऊपर इम्प्रेशन भी आपको नज़र आता है लेफ्ट लंग में. ठीक है. एंड ऑल्सो द पेरिकार्डियम एंड एसोफेगस. सो द डिसेंडिंग thoracic aorta lies posterior to the root of left lung, पेरिकार्डियम एंड एसोफेगस. इन तीनों से जब ये बिगिन करती है तो पीछे की साइड पर होती है. It terminates with the name that is changes. It descends then downwards to left of the vertebrae, and then it ends by becoming or changing their name into abdominal aorta. How? It terminates by anterior to the inferior border of T12 vertebrae. ठीक है, यहाँ ये T11 है, इसके नीचे T12 है. ठीक है. It terminates at the level of T12 vertebrae and enters the abdomen. Here you can see it is entering into the abdomen through the aortic opening or aortic hiatus that is present in the diaphragm, and now it becomes below to it, it becomes the abdominal aorta. ठीक है. The thoracic duct and azygous vein also ascend on its right side and it accompanies through this hiatus. ठीक है, hiatus से वो भी गुजरते हैं, but at the moment you should memorize that how it starts and how it ends, and it ends by becoming abdominal aorta once it passes through the aortic hiatus in the diaphragm. In the pattern that will be more evident in the abdomen, the branches of descending thoracic aorta arises and courses within 3 vascular planes. ठीक है, हम इसके जो branches करते हैं वो 3 vascular planes में करते हैं. वो इस तरीके से कि अगर जैसे ये एक डायग्राम है हमारे पास एटलस में. ठीक है, ये है आर्च ascending aorta, arch of aorta, and then this is descending aorta. ठीक है. Descending aorta you can see here lies just somewhat left towards the vertebrae as well as towards the esophagus. ठीक है. So there are 3 planes जिसके अंदर हम इसकी जो है वो
वास्कुलर प्लेन्स बनाते हैं जिसके अंदर इसकी ब्रांचेस निकलती है, जो हमारे लिए ईजी टू मेमोराइज है। एक एंटीरियर और मिड लाइन प्लेन ऑफ द अनपेयर्ड विजुअल ब्रांचेस, ठीक है। देन लेटरल प्लेन्स होते हैं, ठीक है, जो लेटरल साइड से निकलती है, लेटरल प्लेन्स, एंड दे विल गिव पेयर्ड विजुअल ब्रांचेस। देन पोस्ट्रोलेटरल प्लेन, थोड़ा सा पोस्ट्रोलेटरल प्लेन्स होते हैं, दैट आर ऑल्सो गिविंग पेयर्ड ब्रांचेस टू द बॉडी वॉल, ठीक है, पूरे बॉडी वॉल को वो दे रही होती हैं। In the thorax, the unpaired visceral branches of the anterior vascular plane are the esophageal arteries, जो कि anteriorly निकल रही होती हैं, they are esophageal arteries, and they usually two or somewhere five in numbers, ठीक है। The paired visceral branches of the lateral plane, ठीक है, ये तो unpaired होती हैं जो front से निकल रही होती हैं और anterior plane से, जो lateral plane से निकल रही होती हैं, these are paired visceral branches and they are represented in the thorax by the bronchial arteries, ठीक है। Although in the thorax by the right and left bronchial arteries arise directly from the aorta, but most commonly paired left bronchial arteries do so, ठीक है, लेफ्ट वाली ज़्यादा होती हैं, the right bronchial arteries arise indirectly as a branches of the right posterior intercostal arteries, ठीक है। So you have to memorize this thing, that there is an anterior plane from where unpaired visceral branches come, and from the lateral plane there are paired visceral branches, ठीक है। द पेयर विजुअल ब्रांचेस कौन सी हैं? द पेयर्ड विजुअल ब्रांचेस ऑफ द लेटरल प्लेन आर रिप्रेजेंटेड बाय द ब्रोंकियल आर्टरीज, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वन, द पेयर्ड पैराइटल ब्रांचेस ऑफ थोरैसिक एओर्टा दैट अराइज पोस्ट्रोलैटरली, दे आर 9 posterior intercostal arteries that supplies all but the upper two intercostal spaces and the subcostal arteries। ये देखिए, ये है वो डायग्राम जिसमें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि देयर इज़ असेंडिंग एओर्टा, देन आर्च ऑफ एओर्टा एंड देन डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। द डिसेंडिंग एओर्टा में हमने बताया कि वी डिवाइड दिस डिसेंडिंग एओर्टा बाय 3 वास्कुलर प्लेन, सो कैन वी मेमोराइज इट easily. This is the anterior plane. You can see here that there are the esophageal branches that are coming. They are unpaired branches, and on each side there is the lateral branches, or we can say lateral paired branches, ठीक है। दीज लेटरल ब्रांचेस आर बेसिकली टू द ब्रोंकियल, ठीक है, ये ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं जो कि दैट आर सप्लाइंग दी लंग्स। देन द थर्ड वन आर दी पेयर्ड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज, ठीक है, ये आपको पोस्ट्रोलेटरली जो निकल रही होती हैं, ठीक है, दैट आर सप्लाइंग टू द 9 इंटरकॉस्टल स्पेसेस एंड द सबकॉस्टल आर्टरीज। अच्छा, दे आर एक्सेप्शन टू दीज पैटर्न। इस पैटर्न के अलावा 2 आर्टरीज ऐसी होती हैं या 2 आर्टीरियल ब्रांचेस ऐसी होती हैं दैट आर नॉट फॉलोइंग दिस, ठीक है। दीज आर द सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरीज, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल नीचे यहाँ सामने से निकल रही होती है, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरीज एंड द पेरिकार्डियल ब्रांचेस, ये देखिए साइडों से पेरिकार्डियल ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है। दे डजंट फॉलो दिस पैटर्न। So the subcostal arteries arise from the thoracic aorta but course below the diaphragm। ये जो subcostal arteries हैं ये निकलती तो बिल्कुल उसके ऊपर से हैं diaphragm के, but they have the different course, ठीक है। They are in series with the posterior intercostal arteries, ठीक है। The superior phrenic arteries ये जो निकल रही हैं यहाँ पे आपको नजर आ रही है, they are paired parietal branches that pass anterolaterally to the superior surface of the diaphragm, where the anastomose with the musculophrenic and pericardiophonic branches of internal thoracic artery, जो कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था कि उसके साथ anastomose कर जाती हैं। पेरिकार्डियल ब्रांचेस क्या करती हैं? द पेरिकार्डियल ब्रांचेस आर द unpaired branches that arise anteriorly but instead of passing to the gut send twigs to the pericardium, ठीक है, and the small mediastinal artery that supply the lymph nodes and the other tissues of the posterior pericardium, they also follow the same. So up till now we came to know about the descending thoracic aorta, how it starts, or we can revise it like this, that the descending thoracic aorta begins from the arch of aorta in front of the body of T5 vertebrae, T4 vertebrae, T4 T5 के साथ ये स्टार्ट होती है, and it will comes downward up to the T12 vertebrae, okay. It descends downward just lateral to the vertebral column as well as esophagus. And what the branches it gives some paired branches and some unpaired, and it follows the 3 vascular patterns.
और जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज इनमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट passes laterally and then anteriorly parallel to the ribs and their branches are lateral anterior cutaneous branches. ठीक है, जो कुछ cutaneous branches भी ये posterior intercostal arteries देती हैं. ये थर्ड वन है जो कि paired posterolateral plane को फॉलो करती हैं. सेकेंड पर आती थी हमारे पास ब्रोंकियल आर्टरीज. ठीक है, दैट आर कम्स फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एओर्टा और दे रन विद द ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री. ये ब्रोंकियल आर्टरी आ जाती है, दे रन विद द ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री एंड दे सप्लाइज द ब्रोंकियल एंड पेरीब्रोंकियल टिश्यू. ठीक है, विजरल प्लूरा को भी. जो हमारे पास अनपेयर्ड आती हैं, दैट आर द एसोफेजियल 4 to 5 branches that are coming from the anterior aspect of thoracic aorta. They runs anteriorly to the esophagus and they are basically some branches supplies to the esophagus. Definitely esophageal branches of the esophagus को supply करेंगी. फिर जो एक जिसको फॉलो नहीं करता पैटर्न को, वो दो आर्टरीज है, सुपियर फ्रेनिक और पेरिकार्डियल ब्रांचेस. ठीक है, द सुपियर फ्रेनिक दे आल्सो कम्स फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ thoracic aorta, but after they arise they passes to the superior aspect of the diaphragm and basically supplies to giving branches to the diaphragm. फिर आती है पेरिकार्डियल ब्रांचेस. दीज पेरिकार्डियल ब्रांचेस आर मेनली सप्लाई और दे आर अनपेयर्ड ब्रांचेस दैट राइज एंटीरियरली, but instead of passing to the gut they basically supplies the pericardium as well. So this was about the posterior mediastinum, its contents एंड इन इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा उसकी ब्रांचेस हैं वो मैंने आज आपको करवा दी हैं. जो थोरेसिक डक्ट है वो अभी आपको करवा दिया जाएगा. बाकी जो इसके कंटेंट्स हैं पोस्टीरियर मिडास्टिनम के, एसोफेगस वो आपको करवा दी गई है. वेन्स में एसोफेगस, हेमीजाइगस, एक्सेसरी वेन्स आपको करवा दी गई हैं और लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाएगी, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक्स वो भी कवर हो जाएंगे पोस्टीरियर मिडास्टिनल लिम्फ नोड्स. ठीक है, so this was whole about the descending posterior mediastinum along with the descending thoracic aorta and its branches.